So what a test match. England Shandar Jeet, 113 runs. They won the test match, second test match, and leveled the three-match series 1-all. Wisden Trophy में अब भी जान बचा है. And the third test match starts on Friday. And उसके पहले इंग्लैंड ने शानदार जीत हासिल की है. आई थिंक ये टेस्ट मैच बेन स्टोक्स के लिए याद किया जाएगा बिकॉज बेन स्टोक्स ने इस मैच में 254 रन्स बनाए और दोनों इनिंग्स में उन्होंने विकेट्स लिए. पहले इनिंग्स में 1 विकेट और दूसरे इनिंग्स में 2 विकेट और उन्होंने काफ़ी बढ़िया फील्डिंग भी किया, कमिटमेंट दिखाया. आई थिंक दैट इट इज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंग्लिश विन. और आज जैसे मैंने कल भी रात को कहा था, आई थिंक दैट द फैक्ट दैट दे केम बैक विद अ प्लान टुडे एंड बैटेड just about the right amount of time or set a target for West Indies. And all credit to Ben Stokes जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और इंग्लैंड की वापसी कराई इस टेस्ट मैच में. हाय शोभित, हाय जयराम, हाय निशांत. यस, दूसरी बड़ी खबर आज की, T20 विश्व कप आखिरकार पोस्टपोन हो गया. हाय अभिजीत, हाय शोभित, हाय निशांत. Yes, T20 वर्ल्ड कप हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ऑफिशियली. अब ये डिसाइड होना बाकी है कि 2021 में इंडिया में होगा या ऑस्ट्रेलिया में, और 2022 में इंडिया में होगा या ऑस्ट्रेलिया में. और एक सिग्निफिकेंट डिसीजन ये रहा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो अक्टूबर-नवंबर के महीने में होगा, ना कि फरवरी-मार्च में. ये आई थिंक दैट दिस विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज पूरे इंडिया में उस वक्त ड्यू होता है और नॉर्थ में ये स्मॉग भी होता है और इसके वजह से काफ़ी पोल्यूशन की वजह से काफ़ी मैचेस भी अफेक्ट हुए हैं. तो आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन. और सीज़न के शुरुआत में वर्ल्ड कप होगा 2023-24 का. सो दैट विल ensure that the pitches will not be as slow and low as maybe when it is held in February March. 96 में और 2011 में दोनों बार फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप हुआ था. 87 में लास्ट बार अक्टूबर नवंबर में हुआ था इंडिया में. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. अभिजीत, डिनर हो गया मेरा. कैसे हैं आप? एंड कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, आई थिंक इंग्लैंड ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की, खासकर बेन स्टोक्स ने, ट्रेमेंडस. और जिस पेस से बल्लेबाजी की उससे दे गॉट टाइम टू बोल आउट टू वेस्ट इंडीज फॉर द सेकेंड टाइम. एंड आई थिंक दैट वेस्ट इंडीज डिड नॉट शो द एप्लीकेशन. कल भी मैं कह रहा था और पहले टेस्ट मैच में भी मैं कह रहा था कि आई थिंक दैट वेस्ट इंडीज का टेल जो है इट इज़ वेरी ससेप्टेबल. And once the top order fell, and despite a partnership between Brooks and Blackwood, it was only a question of time. I think you're right, Nishant, well, that England will be unstoppable now. Pakistan should worry, but I think that Pakistan series will be interesting. जयराम पाल, यस बिल्कुल सही बात है. आईपीएल के लिए विंडो खुल गया है. अगले 5-6 दिनों में आप एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखेंगे उसके बारे में. I believe that BCCI has already returned to the Indian government seeking permission to move IPL to UAE. So I think you'll see some movement in the next 5-6 days. यश, इन हाइंड हम पहले दिन से कह रहे थे कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए थी इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज़ को, सॉरी. आई थिंक दैट्स अ टैक्टिकल मिस्टेक दैट दे मेड. लाइव क्रिकेट, स्टोक्स एक ऑलराउंड क्रिकेटर है, बट यू शुड नॉट डिस्काउंट जेसन होल्डर. वो क्वाइटली अपना परफॉर्मेंस करते हैं, बट स्टोक्स इज अ ट्रेमेंडस क्रिकेटर. आई थिंक दैट इंग्लैंड इज ब्लेस्ड टू हैव समवन लाइक हिम इन देयर लाइनअप. आई थिंक ही इज ब्रिलियंट. He's done a tremendous job for them over the last few years and really come on in leaps and bounds. हेलो देवराज, कैसे हैं? यस, बिल्कुल सही बात है निशांत. ये सही बात है. Dom Best was looking good and I think Sam Curran played a big part. Sam Curran was a tremendous influence. मैं पढ़ रहा था कि सैम करन ने 8 टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में और इंग्लैंड 8 टेस्ट मैच जीता है. So I think that's a big development.
सूरज, सही बात है, मैंने कहा था कि मीटिंग फिक्स नहीं है और ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा था। मैं अब भी कहता हूँ न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, और मैं भी नहीं करता जब तक ऑफिशियली नहीं होता। जब ऑफिशियली हो गया तब मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ। हाय मानव, कैसे हैं आप? आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डे। फाइनली T20 वर्ल्ड कप डिले हो गया 1 साल के लिए, और अगले साल का फाइनल का डेट फिक्स हो गया है, और 2022 के फाइनल का भी डेट फिक्स हो गया, 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप का भी डेट फिक्स हो गया है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, इट रिमेन्स टू बी सीन कि कहाँ पे होगा ये इवेंट्स। 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप तो इंडिया में होगा, बट अगले 2 साल T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा ये अभी तक पक्की बात नहीं है। देवराज हंस, बैंड डजंट स्टॉप। वेल पॉइंटेड, वेल, वेरी वेल पॉइंटेड। सार्थक, मुश्किल है इस बेसिस पे एंडरसन को खिलाना, क्योंकि इस मैच में सारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया। टेस्ट मैच जीता है भाई, सीरीज लेवल हो गया 1-1। आई थिंक यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू leave out all these bowlers who have done well. सूरज, सैम करन को चेपॉक में बुलाओ, फिर देखेंगे क्या रिकॉर्ड कंटिन्यू होता है। वो उसको चेपॉक में बुलाएंगे भी नहीं, डरिए मत। Next test match, I think if I were England, I will pick the same 11. Maybe just drop Chris Wokes and bring in Jofra Archer, but apart from that, make no other tinker with the 11, in my view. Live cricket, Jofra Archer is available to play the next test match, but I'm not so sure if they will want to change the playing 11. India should host 2022 because there is 1 year gap between 2022 and 2022. What a year it will be, यार। 2022 T20 वर्ल्ड कप, फिर IPL, और फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप। वे ट्रेमेंडस टाइम इंडिया में क्रिकेट के लिए। अभिजीत बसक, ये सब वंस इन जनरेशन प्लेयर हैं। एलिस्टर कुक, जस्टिन लैंगर, मुरलीधरन, कपिल देव, ब्रेट ली। इंतज़ार कीजिए, हमारा भी वक्त आएगा, इंतज़ार कीजिए। Yes, Madhitya Tejas Vinod Bhai. I will do book review shows as well. Don't worry about it. And I'll have an announcement to make in the next few days. I'll keep you posted on that. हेलो रेहान, कैसे हैं आप? कैसा है सऊदी अरेबिया? सार्थक, इंडियन टीम का कैंप मोटेरा स्टेडियम में लगने वाला है। ये बात आई थिंक 90% पक्की है, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम में सेल्फ सफिशिएंट एकोमोडेशन है, और बाकी सब प्लेइंग फैसिलिटी भी है। इंडोर स्टेडियम है, इंडोर नेट्स है, और आई थिंक 60 लोगों के लिए एकोमोडेशन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कैंप मोटेरा में होगा, बट मेरे ख्याल से गुजरात में इस वक्त कोविड-19 का सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, so you might see some changes. You don't know. First choice is Motera, second choice Dharamshala, third choice Dubai. Yeah, it will be interesting to see what West Indies does. I would look to play O'Shane Thomas and leave out Shannon Gabriel because he looks a bit tired. I would look to bring in O'Shane Thomas, or maybe surprise by England by playing Chamar or Holder. I think that might be a surprise choice for West England. ऐसे कि राइट स्टार ने ले लिया क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। They did take the 3 TC cricket rights, but apart from that, there is not much news about any other rights because Star is not really investing in rights right now. Yes, all IPL teams will lose their home advantage, including CSK. You're right about that, Tejas Vinod Bhai, but you can't do anything about it. It's a desperate situation. Suraj, I think in the next 5-6 days, once the government gives permission, then you might see uh, some changes in the announcement about the IPL.
Yes, I'll be doing regular lives for all matches from now on, for all international matches, and also during the IPL. So this is now a never-ending thing. Now you might see me getting guests as well for live to review matches. Suraj Unadkat will look like Mitchell Stark in UAE condition, but yeah, give him credit. Yeah, he's done well in Ranji Trophy. He's led Saurashtra very well. You must give him credit. Hello, Akurati Praveen. How are you? Hi, Abhishek. Yes, Rehan, I'm feeling so good. England has finally won a test match. मेरी prediction सही आ रही थी. मुझे लग रहा था कहीं पे my prediction will not come good. Now, as I think Nishant Ved said, it is going to be difficult to stop England in this series. Now they have smelt blood and now they'll go in for the kill. I think they'll be very difficult to stop from now on in this series. It's been a tremendous fight back by England. Despite losing a day, तीसरे दिन का खेल आपको याद हो बिल्कुल नहीं हुआ. तो उसके बाद टू कम बैक इज अ बिग बिग थिंग. जयराम पाल फिर एक बार करेंगे आकाश चोपड़ा के साथ लाइव. डोंट वरी अबाउट इट. देवराज स्टोक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा बट इंजरी की वजह से उनको रोकना पड़ा अपना बॉलिंग. स्टोक्स का जो इंजरी है इंटरेस्टिंग होगा कैसे वो रिकवर करते हैं बिकॉज अगला टेस्ट मैच फ्राइडे से है. 3 दिन का गैप है तो आई डोंट नो हाउ बैड और गुड दिस इंजरी इज. Akurati Praveen feels West Indies will also lose the third test match now. I have a feeling now that England has the momentum. Uh, so you never know. England, your prediction could prove right. No, Nishant, India is not playing any match before IPL. They'll only have a camp if anything. Vipul Varthwal, Chandresh Bhai, I'm from Uttarakhand, Badrinath. I hope you'll come here. I'll definitely come there, Vipul. बहुत जल्दी. Yash Kumar sir isn't overconfident about India tour of Australia 2020-21. That's why overconfidence के कारण. Gautam Gambhir. I think you are right. I don't want to call it overconfidence. He has belief in India's ability. Uh, let's hope he's proved right. It's good if it happens, then it's good for Indian cricket. Stokes bowled 10 overs in a row in first inning. Yes, Suraj, Stokes is a once in a lifetime cricketer, and England is so lucky to have him in their lineup. Uh, I just hope he recovers in time for the third test match, which starts on Friday. नहीं अभिजीत, मैंने अभी तक मनजोत से बात नहीं की है. मैं बात करके आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा अभिजीत उनके बारे में. Yeah, Mani, I think that the first day West Indies lost an opportunity. They didn't give away too many runs, but they didn't uh, exert control that day. I think that was the mistake that they made. I think that's where they lost the test match. चंद्रेश भाई, हम फ्रॉम उत्तराखंड. आप जरूर इधर आएंगे. बिल्कुल आऊँगा विपुल भाई. बिल्कुल आऊँगा आपसे मिलने के लिए. I don't think Stokes will be able to recover. Devraj, let's wait and watch what happens. Bipul Dahal, do you think Cornwall will play third test match? It's going to be difficult to make changes for West Indies because their problem has been their batting. So the they'll need to drop one of the batsmen, maybe Shai Hope, and bring in an extra bowler and leave out Shannon Gabriel because he looks a bit tired to me, and bring in Ocean Thomas or surprise England by playing Chamar Holder. Looks difficult, Praveen. Archer and Anderson playing the third test match. Right now it looks difficult. Yes, Nishant, Root will perform. He's due. Yeah, absolutely. Suraj, don't pay attention to what people say. इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो. फैक्ट इज आप जो फैन हैं आप ही की वजह से आज क्रिकेट बचा हुआ है. जो इंडियन फैन है, अगर इंडियन फैन ऊब गया क्रिकेट से तो क्रिकेट खत्म है. ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर विपुल बर्तवाल, कपिल देव. I think that all four all-rounders of the 80s were very good. I think Kapil Dev was the most natural of them all. प्रिंस राय, ये खबर मैंने नहीं सुनी है कि स्टार क्रिकेटर नहीं खेलना चाहते हैं आईपीएल. सो
I think that I'll have to check that up. Once I check that up, I'll let you know. Money, I think that Sino, I think that West Indies, this batting lineup is good, but it doesn't. It can be a bit susceptible under pressure. But if you go to see, this batting lineup has played together for about 4 5 years, so they've got some experience, and I think that that could be a thing. Oh, and one more thing, they have a player called Joshua De Silva. A lot of people have been praising him. He could play in the next Test match. There's a very strong chance that they could play him in the next Test match. Suraj, yes, I think that Ashwin on the 2018 tour was disappointing. You're absolutely right, and he was unfit. And I think overall India's overseas record has to improve. We can't just go on saying that we have the best pace attack, best batsman in the world, and not play to our potential. Yes, Vipul Bartwal, England, Pakistan is going to be a very interesting series. I see it's going to be a very tough series for both sides. I would still see England beating Pakistan. Somehow something tells me that England will beat Pakistan. देवराज एक वाइट प्लेयर को चांस दिया हुआ है वेस्ट इंडीज में, जोशुआ डिसिल्वा. अगर प्लेयर होगा तो ही चांस देंगे ना. प्लेयर जब भी होते हैं उनको अगर परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उनको चांस मिलता है. Praveen, it's difficult to say who do I rate. I think you're forgetting Flintoff. I think Flintoff was a all-round cricketer, tremendous bowler, bowling at 90 miles an hour. He was fantastic. Injury prone, but tremendous cricketer. You're forgetting Flintoff. Yeah, Suraj, you're right. I think that right now we've got the best pace bowlers around. All teams have got good pace bowlers. Let's put it that way. I think that's the best part about this era right now. ICC Test Championship, who has more chances? Difficult to say right now because India has to start winning abroad. They've lost 2 Test matches in New Zealand, and Australia will keep doing well. England will come back strongly because they're playing Test cricket now. So it's going to be a difficult call to make now. विपुल बर्तवाल मोहम्मद शमी से वक्त मांगा है. जैसे वक्त मिलता है मैं वीडियो बना के जरूर आप लोगों के लिए पेश करूंगा. So that's why I say don't compare eras. हर एरा की अलग बात होती है. 90s की अलग बात थी, उसके बाद अलग बात थी, अब अलग बात है. तो every era has got its own charm. I think that Pat Cummins versus Virat Kohli will be the most interesting one for me because to see a champion batsman being tested by a champion bowler and someone like Pat Cummins, who's at the top of his game right now in Test match cricket, is injury free. Let's hope he doesn't remain injury free when India is playing Australia. And he is so that will be an interesting battle for me because that will really set up the series, in my view. If they control Virat Kohli, then they will control India. Yes, you're right, Devraj. West Indies reversal matter master. Akurati Praveen, but I don't think Flintoff is as good a batsman when compared to Stokes or Bottom. Possibly, but he had his own charm with batting as well. And Bottom and Stokes were, I think, better batsmen, and Flintoff was a better bowler. विपुल बर्थवाल बिल्कुल लगे रहेंगे. आपकी दुआ रहेगी तो आप दोस्तों रिश्तेदारों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम लोग चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे आप लोगों का साथ रहा तो. मैं नेक्स्ट मैच में आई थिंक दैट आई विल लीव आउट शाई होप एंड प्ले Rakeem Cornwall and then bring in either Oshane Thomas or Chamar Older in place of Shannon Gabriel. रेहान, ये मेरा प्लेइंग 11 होगा. People, I will choose Ishant. I don't think Bhuvi is now fully ready for Test cricket as yet. I would pick Ishant any day over Bhuvi in Australia. रेहान बिल्कुल सेम इंग्लैंड 11 हो सकता है. विपुल बर्तवाल
Most memorable match, I would say that 2004 Pakistan tour. The whole tour was memorable because to see a historic win for India was tremendous. Yes, you're right. Devraj Chase is underrated. He's done well against England, especially. Good observation, Suraj, about Kohli on the Australia tour. You never know. India is forced to go a month before for quarantine reasons. You might see India doing well in that series because they'll have enough time to acclimatize. Uh, without otherwise, Indian teams go 1 week, 10 days, 15 days before. The fact that they might be going a month before is a good sign. रीजनल रेसिज्म इंडिया में भी होता है देवराज बोल सकते हैं Majidya Tejas Vinod Bhai, yes, it is about the way the team management uses players. Stokes, you're right, plays three formats, IPL. I think that somewhere India needs to crack the whip and ensure that the contracted players are used sporadically, including during IPL. हम अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को खुला छूट देते हैं आईपीएल के दौरान एंड देन दे बिकम अनफिट ड्यूरिंग प्लेइंग फॉर इंटरनेशनल मैचेस. So I think that it is unfair in my view that the contracted players are not looked after. That's why you need a proper professional setup with a director of cricket to look after the whole thing. So I think that needs to happen. Nishant, let's hope your gut feel is right because India is going to get a month to prepare for the series. You never know what happens. अभिजीत, मैं T20 स्टेटस इंटरनेशनल स्टेटस के खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें करप्शन बढ़ने का चांसेस होता है बिकॉज जो भी मैच लाइव होता है उसमें सट्टा लगता है एंड करप्शन का भी चांसेस होता है. बट आई एम ऑल फॉर प्रमोटिंग द गेम एंड टेकिंग इट टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. वरना हम वही 10-12 टीम देखते रहेंगे हर साल. और इस वक्त 106 कंट्री हैं और ज़्यादातर कंट्री में इंडिया पाकिस्तान एक्सपैट्स ही खेल रहे हैं विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द स्पोर्ट. Suraj, you are right. I don't rate Shastri as a coach. I would have preferred Mike Hassan as a coach any day. I feel that he could have taken Indian cricket to the next level. Nishant, right now it's doing well. Subscriber count. मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस हूँ इसलिए सब्सक्राइबर काउंट इस वक्त नहीं बताऊंगा. आप लोगों की दुआ से अगर हम बड़े नंबर पे चले जाएंगे तो बात करेंगे जरूर उसके बारे में. Yes, I think that right now Australia can beat India in India. I'm not so sure about England because they don't have the spinners right now, like Graham Swan and Monty Panessa. But India can be beaten by Australia in India. ये मैं नहीं हूँ, ये कोई दूसरा देवराज है. ओके देवराज. Vipul Dal, I see Navdeep Saini playing very soon for India in Test match cricket, as early as in Australia tour. I think that his time has come. It's just a matter of time before he starts playing in Test cricket for India. One tour, and then you'll see a lot of changes in the Test 11. Because ये जो टेस्ट 11 है, ये जो टेस्ट कोर है, ये 5-6 साल से एक साथ खेल रही है और ये एक साइकिल होता है, 6 साल के बाद बदलता रहता है. You might see the score changing very soon. Satyakam Mahapatra, I don't think the Indian team is looking at Khalil as a long format bowler. They're looking at him as purely as a wide ball bowler right now. So while your thought process is good, Satyakam, but I don't see him playing in Test match cricket for India. Suraj, come on, be a bit more positive here. Don't be so negative about this. Vipul Bartwal, the reason I've explained a few times, channel name Cow Corner Chronicles इसलिए because cricket field में Cow Corner एक जगह होता है फील्ड पे लेग साइड पे यहाँ पे शॉट मारना सबसे मज़ेदार बात होता है. I think that's why the channel name is Cow Corner Chronicle. Devraj, same reason why India is not able to win in New Zealand because they're not able to adjust to conditions quickly. But now I think that New Zealand finally has a team which might surprise India.
थैंकफुली हम इस साइकिल में नहीं खेल रहे उनके साथ अगले साल तक, अगले साइकिल में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स अलॉट निशांत, योर हेल्प इज मच अप्रिशिएटेड। आप लोग सब सुपर चैट के जरिए इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप आपके सामर्थ्य के हिसाब से सुपर चैट से चैनल को कंट्रीब्यूट कीजिए। आप में से कुछ लोगों ने, जैसे गुरुदत्त आचार्य और सूरज क्रिकेट ने कंट्रीब्यूट किया है सुपर चैट से। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका और गुरुदत्त आचार्य, आप दोनों का आपने सुपर चैट के ज़रिए कंट्रीब्यूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी लोग अगर सुपर चैट से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चैनल को हेल्प करता है तो बहुत बढ़िया होगा। रेहान खान सर, जब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होते हैं तो पिच डिफरेंट होती है, और जब पाक इंडिया वेस्ट इंडीज जैसी टीम होती है तो पिच डिफरेंट होती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिचेस जो भी होते हैं वो इंग्लैंड अपने होम कंडीशंस के हिसाब से बनाता है, जो उनको सूट होता है और उनका बनता भी है। Suraj, I haven't watched a single 2012 England tour of India, but I've listened to radio commentary to every ball of that test series, and I stopped watching cricket for some time after that. Yes, even I got disheartened after that series because India messed up the entire series in my view. Team selection हर मैच में गलत था after winning the first test match. कौन से टीम में चेंजेस की बात करें देवराज आप? Majithia Tejas by BCCI influence since many years. I am following cricket. How to take away political influence from sporting administration? Very simple. Disband the honorary system, make it a corporate setup, get professional CEO, general managers to run the sport, all sport, not just cricket, at all levels. You will see Indian sport growing exponentially. बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका, आप लोगों का साथ रहा तो 20 मिलियन क्या, हम उसके साथ ज़्यादा भी चले जाएंगे। शाहिद अहमद, आई डोंट नो बिकॉज शाही होप भी आउट ऑफ फॉर्म है, कैम्बल भी आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा चल रहे हैं। आई वुड probably drop Shai Hope and bring in Rakeem Cornwall and bring in Shannon Gabriel की जगह पे चमार होल्डर या ओशन थॉमस। विपुल बर्थवाल, आई फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर अश्विन टू प्ले T20 वनडे क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट। देवराजन, सुपर चैट होता है, आप अगर यूट्यूब पे हैं तो उसमें एक सुपर चैट होता है, आप अपने हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल के लिए। सूरज ने और गुरुदत्त आचार्य ने किया अब तक, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। सुपर चैट, अगर रेहान आप यूट्यूब पे हैं तो आपको सुपर चैट का ऑप्शन दिखेगा चैट विंडो में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से, आपके एबिलिटी के हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल के लिए, ताकि हम इस चैनल को और आगे बढ़ा सकें। सूरज एंड गुरुदत्त आचार्य ने अब तक सुपर चैट का इस्तेमाल किया, और भी लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। Akurati Praveen, it's not possible to play Asia Cup because Asia Cup was specifically being held to play before the T20 World Cup. Now with T20 World Cup gone, there's no point in playing Asia Cup. Rafe Gibran, if given a choice, what would be your three fast bowlers for Pak first test against England? Amir, Shaheen, Naseem Shah, Abbas, Wahab, Sohail Khan. I would pick Naseem Shah, Abbas, and Sohail and Shaheen Shah Afridi in the first test match. सूरज, इस वक्त थोड़ा कहना मुश्किल है कि घास उतना ही रहेगा कि नहीं। कम थर्सडे यू माइट सी द ग्रास कमिंग डाउन। फनी, आई जस्ट ऋत्विक, राइट, आई जस्ट picked my playing 11. I would pick Rakeem Cornwall in place of Shai Hope and bring in Oshane Thomas or Chamar Holder in place of Shannon Gabriel. विपुल, ये बात हम रोज भी करते हैं अबाउट लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर। आई थिंक इट्स अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया एक साइकिल की गुजर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग गुड क्विक लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर्स राइट नाउ। मे बी वेरी सून वी विल हैव अ साइकिल पॉसिबल। सूरज, यू आर राइट, दे वर टॉकिंग अबाउट इट, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट कम थर्सडे, अभी और 3 दिन है, कुछ भी हो सकता है। मनी सीनो, एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं, वरना तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो it's it's good in a way that he's coming, at least he's coming to talk, Ravi Shastri.
विपुल बर्तवाल, फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करंट, देयर आर लॉट्स ऑफ देम यार। भरत सुंदरेशन है, और विक्रांत गुप्ता है, श्रीनिवास राव है, विजय टैगोर है, बहुत सारे प्लेयर लोग हैं यहाँ पे। ये काउ कॉर्नर जो है, इट्स अ प्रेटी रीसेंट फिनोमिनन बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट। सो it is it's quite recently come into the cricket lexicon in that sense. Majitya Tejas Vinod Bhai, थैंक्स अलॉट अभिजीत आपके टारगेट का। मैं चेक करता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा सुपर चैट आपके। नहीं है वो, बिल्कुल वो चैट विंडो के नीचे एक डॉलर साइन है और एक कस्टम इमोजी है। आप विपुल, अगर आप दोनों में से एक को क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप वो डॉलर साइन पे आप अगर क्लिक करेंगे, वो सुपर चैट का साइन है। अगर मैं आपको अपने फ़ोन पे दिखाऊं तो आपको इस पे दिखेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, 1 मिनट। तो अगर आप इस फ़ोन पे देखेंगे आप, तो अगर आप चैट पे जाएंगे, आपने अगर चैट को एबल किया होगा, तो नीचे की तरफ आपको ये यहाँ पे एक साइन दिखेगा डॉलर का और एक इमोजी। दोनों में से किसी एक को क्लिक कीजिए तो आपको मिलेगा वो। Akurati Praveen, what about smaller boats like Afghanistan, Bangladesh? Will they get like Asia Cup upgrade? Yes, you are right, but also you need to remember that they get enough and more revenue from the ICC pool as well. But this is not a loss. The Asia Cup is going to happen next year, so they'll get their share next year and the year after that as well. Bilkul, I think Devraj Naseem has got a very good sign. मेरी एज, मैं अभी भी 40 साल का जवान हूँ अब विपुल भाई। और हाँ, मैं 20 साल से हूँ इस प्रोफेशन में। अ, तो यही है बात। सूरज, या बिल्कुल, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के हमेशा सब कुछ हिस्टोरिक और बॉल ऑफ द सेंचुरी होते हैं। जो बॉल मुथैया मुरलीधरन ने सत गोपन रमेश को डाला था 2001 में तीसरे टेस्ट मैच में, आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ बॉल ऑफ द सेंचुरी। Why should it not be? So I think that we need to start promoting ourselves as well. Hi, Nilesh Rawrane, Vipul Dhal, sir, can we see Chal and test? Difficult, Vipul. I think it's very difficult. Hello, प्रथमेश कैसे हैं? देवराज हंस कैसे हो? हाँ, वो सुपर चैट पे आप वो डॉलर का साइन होगा रेयान, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको आपको सुपर चैट का ऑप्शन मिलेगा। Satyakam, I have a very strong feeling that Harshal Patel might find himself because at least 28 से 30 जन का स्क्वाड होगा। Satyakam, so I think that you might see Harshal Patel going on that flight to Australia. क्रिकेट ओनली, यस, बीसीसीआई कैंप लगा रहा है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली मोटेरा में होगा, अहमदाबाद में। बिल्कुल, आई एम हैप्पी दैट आपको लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी इंप्रूव है। मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में ही लगा हूँ, इसलिए मैं कह रहा था अगर हो सके तो आप लोग सब सुपर चैट के जरिए जुड़ जाइए। हाँ, गुरुदत्त आचार्य कैसे हो? गुरुदत्त आचार्य, सूरज क्रिकेट, या ये अभी तक पक्की बात नहीं है अबाउट इंडिया गोइंग टू न्यूजीलैंड। अगर होती है तो बताता हूँ मैं आपको, बिकॉज बहुत सारा चेंजेस होगा शेड्यूल में बिकॉज ऑफ कोविड-19। मेहुल राज कैसे हो? निखिल अय्यर, मैं नवी मुंबई से नहीं, मुंबई से हूँ। आकुरती प्रवीण, आपका सवाल
आधा रह गया है. Devraj Hans, yeah, tremendous transformation by Stokes. Adam Gilchrist, Prathamesh, I'll choose Stokes, Holder, Roston Chase as some of the all-rounders. Pandya needs to be a bit more consistently playing international cricket before I can choose him in the top tier. Yes, director of cricket is Saurabh Jain. Director of cricket is above selector, coach, and he's the boss of cricket, of all cricket in a particular country. Like in England, it is Ashley Giles. In South Africa, it is Graham Smith. In West Indies, it is Jimmy Adams. India needs to have a director of cricket like that, because that director of cricket will coordinate with the selectors, with the cricket operations department in his country, in the other countries, plan tours, plan camps, look at options, uh, uh, manage workload of players, manage workload of fast bowlers, especially because you must remember that our fast bowlers are going to be very much used in the next few years. So you need to ensure that our fast bowlers are used wisely. All those things comes from a director of cricket being there at the top, and he coordinates with everybody at all levels. He's the boss, and the head coach is then answerable to director of cricket, and then there is a system in place. There's a cricket operations department, the coach, selectors, everybody's reporting to director of cricket. I think that's very important in cricket. That's a very good question, Praveen. I don't see MSD as being part of the camp because of the fact that he's not played any cricket in the last 1 year. So I don't see him being part of the camp. Shanu Kumar, yes, IPL on. क्रिकेट ओनली. रवि बिश्नोई के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आप सबको देखने मिलेगा. बट वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट विद दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स. नहीं निशांत वैद, अगर वुमेन्स आईपीएल होगा तो पाकिस्तानी गर्ल्स नहीं खेलेंगे. Suraj cricket, I tend to agree with you. I think that Shreyas Gopal needs to be given a chance, and also I think that K. Gautam needs to be given a chance. I think that his turn should also come in T20 cricket for India. Mehul Raj, कैसे हो? Vipul Dal, your favorite IPL team? There's no IPL team favorite as such, but I like Delhi Capitals. Yes, Suraj cricket, I agree with you. Shreyas Gopal के बारे में. Test leg spinner, I think that right now the leg spinner that we have is Kuldeep Yadav for Test match cricket. We need to give these two boys, Rahul Chahar and Mayank Markande, some more time. उसके बाद ही हम आगे बात बढ़ा पाएंगे. शानु कुमार, यूएई में सब कुछ खुल चुका है, तो मेरे ख्याल से यूएई गवर्नमेंट विल अलाउ आईपीएल टू हैपन ओवर देयर. करेंगे, ज़रूर करेंगे. मनोज डिमरी, राहुल रावत, अनिल सिंह के साथ भी लाइव, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. मेहुल राज, थैंक्स अ लॉट, यू गॉट टू नो मी फ्रॉम स्पोर्ट्स तक. धर्मेंद्र बिजरानिया, कैफे क्रिकेट के साथ कोलैबोरेशन, मैं कल बात करके आपको कल अपडेट कर दूंगा उसके बारे में. आई डोंट हैव डॉलर फॉर सुपर चैट. है, दो ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा. बिल्कुल देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए. ऐसे कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हो सके तो कर लीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग योर फ्रेंड्स को भी सब्सक्रिप्शन. एडम गिलक्रिस्ट, इससे भी अच्छा टीम मिला था अपने को बीट करने के लिए 2018 में. प्रथमेश, आई थिंक दैट इट इज़ अ ट्रैवेस्टी कि हम लोग इंग्लैंड को हरा नहीं पाए 2018 में. Mehul Raj, I think that the reason India doesn't have multiple all-rounders is that our cricketers are not encouraged enough to do one or more skills, and most of our players, our all-rounders, are doing mostly well in the shorter format, which is not really the ideal way to find out a test match all-rounder. You see Sam Curran, Ben Stokes, they're all coming after playing a lot of first-class cricket, and also they have been consistent in test match cricket. अपने यहाँ पे अभी I think that the two best all-rounders in terms of longer form cricket
are Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja, but they need to be a bit more consistent with the bat. Shanu Kumar, very disappointing that to hear what Mackay Anthony said about racism. I think that was a very sad commentary on what cricket is in South Africa. रवि शास्त्री नहीं जीतने देता धर्मेंद्र बिजरानिया. Thanks a lot Rutvik for using the super chat. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद एंड होता है. धर्मेंद्र बिजरानिया. देवराज हंस, दिनेश कार्तिक को T20 से क्यों बाहर रखा है? I agree with you, Devraj. I think that Dinesh Karthik should be playing T20 cricket regularly for India. I think it's a complete mistake in my view. I think he's the best finisher in T20 cricket in India right now. Nishant, I agree with you women's IPL, but I think the market situation may not dictate the presence of a women's IPL right now. So let's see what happens. Dharmendra Bijrania, सर कमर राजा के साथ लाइव शो जिसमें हमारे को इसको भी लेना है. जरूर लेंगे सर, जरूर लेंगे, इंतजार कीजिए. मैं चैलेंजर के हक में हूँ अभिजीत. मैं आपके बात से एग्री करता हूँ. एक चैलेंजर सीरीज होना चाहिए एंड उसके हिसाब से फिर टीम्स को सेलेक्ट करना चाहिए. आई थिंक आई क्वाइट लाइक द चैलेंजर कॉन्सेप्ट दैट वी हैड इन द पास्ट. आजकल वो फॉर्मेट देवधर में फॉलो होता है, तो आई थिंक चैलेंजर को वापस लेके आना चाहिए. इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से दैट देयर शुड बी अ 4-day मैच सीरीज, 3-match 4-day सीरीज बिटवीन इंडिया सीनियर्स एंड इंडिया ए. दैट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट. बिल्कुल कमर राजा के साथ लाइव शो करेंगे धर्मेंद्र जी, और आप सबका सवाल लेंगे उसमें. BCCI president, let the director of cricket be answerable to president, secretary, CEO, whoever. But there has to be a director of cricket, Dharmendra Acharya. It's the need of the hour right now. Sunny Sino, the batting is dependent on Rohit and Virat in the white ball and on Virat in test match cricket. You're absolutely right. It's going to be a very difficult time for India if these two don't perform consistently in all formats. I think you're right. Double G has done a big job for KKR. I think he was a tremendous influence on IPL. I think that it's a good sign that they won 2 times. Okay, Rehan, I understand this feature is not available in your region. Okay, I understand, Rehan. That's okay. There are other ways to help the channel. Mr. Fussy 123, how's your Hindi? So is good for a Tamil. यार बम्बई में पैदा पला बड़ा हूँ तो हिंदी इसलिए अच्छा नहीं, ठीक ठाक है. युवराज बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया रहा है बेन स्टोक्स का. वेयर इज एडम गिलक्रिस्ट? कहाँ है प्रथमेश एडम गिलक्रिस्ट? Mani Sino, I think dependent on, because there's a sense of insecurity in the younger players. That insecurity needs to go. Once that insecurity goes, then you will be able to see a lot of young talent flourishing. They need to be given chances. They need to be given more consistent chances. I think once that happens, then India will see better performances from their teams. सूरज क्रिकेट एक ज़माने में 80s में India had so many medium pace all-rounders and all-rounders in general, and it was difficult to pack everybody into one team. You had the great Kapil Dev, Roger Binny, Madan Lal, Ravi Shastri, मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा भी बल्लेबाजी करते थे, मोहिंदर अमरनाथ, भरत अरुण बाहर से आते थे, वो भी ऑलराउंडर थे. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे ऑलराउंडर्स के लिए. तो आई थिंक दैट एरा हैज गॉन. वो एक साइकिल होता है. I think Vipul, you're right. The cricket has not spread. That's a failure of the ICC in my view. They haven't done enough in my view.
to promote the sport. आज के दिन cricket is majorly being played world over by the expats from India and Pakistan, which is uh, which is good. We are about 2 billion people, but I think that it needs to grow more, in my view. थैंक्स अ लॉट रेहान, आप ज़रूर चेक कीजिए और बताइए मुझे. Funny, next probable Indian coach, in my view, should be Mike Hessel, but most probably the populist choice may well be Rahul Dravid. But I don't see Rahul Dravid coming into this team. He might come when the next lot of players come into the setup. Mehul Raj, I think Yashasvi Jaiswal's time will come. I think with so many tournaments coming up and so many series coming up, you might see Yashasvi first starting out in the shorter format. You're right, he's a very good, effective cricketer. You will see him very soon in the shorter format. धर्मेंद्र बिजरानी, आपको कौन सी वेब सीरीज अच्छी लगती है? सेक्रेट गेम्स अच्छी थी. आर्या जो रिसेंटली आई थी वो अच्छी थी. तो इट्स इट्स आई लव वाचिंग वेब सीरीज. Suraj cricket I was watching. Park was in New Zealand 2011 पहला खेले मैच after 43 overs 193. हाँ, आपको याद हो रॉस टेलर एकदम पागलों की तरह बल्लेबाजी करने लगे. आई स्टिल रिमेंबर दैट मैच. इससे रॉस टेलर से बात की है, बहुत जल्द रॉस टेलर भी इस चैनल पे आएंगे इंटरव्यू देने के लिए. कल ब्रेंडन मैकलम का इंटरव्यू लाइव होगा 11 बजे इंडिया टाइम. आप लोग सब देखिए और अपना कमेंट डालिए उस पर. Satyakam, I don't think you can reveal the process involved in Team 11 selection because that's a privileged information that only the captain and the team management should have. But I'm not surprised that Rahane said that he was not aware of the team final 11. I spoke about the fact that insecurity here. I think that insecurity is revealed in the way Rahane bats in Test match cricket. He needs to be unshackled from this insecurity. स्पोकन इंग्लिश के लिए आप लोगों से बात कीजिए विपुल. जितना आप बात करोगे उतना आप इम्प्रूवमेंट लाओगे. और देयर इज नो अदर वे टू इम्प्रूव स्पोकन लैंग्वेज इन एनी केस, नॉट जस्ट इंग्लिश. जो कोई भी लैंग्वेज हो उसको अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो आप इम्प्रूव होगे. सूरज क्रिकेट या राइट, पाकिस्तान में शायद सुपर चैट नहीं है. Jaiswal can definitely replace Dhawan in the future. I think before that, I think you have the likes of KL Rahul who might play at the top of the order in the shorter format. Bipul. Devraj Hans, Ben Stokes, Rajasthan Royal choker. I don't want to comment on that, Devraj. Mani Sino, I think that Rahane will get one more trip before he's shown the door in Test match cricket. One more series, and then you'll see a lot of changes in the Test match 11. Nilesh Poddawar, should India team management look at a solid batsman in number 5 in ODIs? Yes. And they need to make sure that they are giving the players consistent chances till the 2023 World Cup in the 50-over format. Separate the T20 team, separate the 50-over team, separate the Test match team. Give players specific roles in all three formats, and you'll see the result at the 2023 World Cup and the T20 World Cups. Hello Sachin, how are you? I don't think funny Rutvik, this Indian team is the best Indian Test team. There are lots of gaps in this Test team. They need to plug those gaps. Only then they can be called the best Indian Test teams. अभिजीत बसर, पहले जब चैलेंजेस होता था तो हम लोग ट्यूशन बंक करके मोहल्ले के क्लब में जाके क्रिकेट देखते थे. और इस फॉर्मेट के अगर रिवाइव किया जाए तो व्यूअरशिप को रिन्यू भी आएगा और गेट मनी भी आएगा. बिल्कुल सही बात है अभिजीत. There needs to be a national club championship in my view. I think that वो होना बहुत ज़रूरी है. I think that needs to happen just like it happened in UK, Pakistan. सब जगह भी एक national club championship शुरू हो गया. Encourage people to play nationally.
So we are able to play for a national club championship and a national club champion. That'll be brilliant. My choice for wicketkeeper in shorter format right now they are sticking to KL Rahul. I would stick to that, but I would pick Pant as the backup in the shorter format. Sachin, I have already spoken about the changes in the third test. I feel that they might drop bring in Rakim Cornwall, drop Shai Hope, drop Shannon Gabriel, and bring in either Chamar Holder or O'Shane Thomas. Sagar Malik, I've spoken about it a few times. I think that if India doesn't win the T20 World Cup, you're right, the T20 captaincy might change. You're absolutely right. Arnav Singh, who wins the IPL? Who do you think will win? I think this time you might see a new winner because you're playing in a new territory. You might see changes. You might see a new winner in my view. Yes, Tilan Samaravira was a very good cricketer. I agree with you, Suraj. Bipul Dal, I feel that it could be Cummins and Stark who might do very well whenever cricket returns. Not yet, Praveen. That is not true. Next year's T20 World Cup and 2022's T20 World Cup has not yet been decided. The venue has not yet been decided. The dates have been decided, but the venue has not been decided. We'll come to know that very soon, maybe in another 3-4 months' time. विपुल मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है तो मैंने हिंदी में उनसे सवाल नहीं पूछा आई एम सॉरी अबाउट इट अगले बार ज़रूर पूछूंगा आई एम रियली सॉरी अबाउट इट बट रिकॉर्ड कर लिया है और अगले बार जब मैं करूंगा मैं उनके साथ मैं हिंदी में ज़रूर सवाल पूछूंगा Mani Sinu, the only way to make Test match cricket more accessible and marketable and viewable is that you improve the facilities for fans at grounds. Right now in India, the stadiums, the new stadium especially, are all outside the center of the city. And that's why people are finding it difficult to bunk offices and go there. Play a bit more of day-night test matches and ensure that it's an experience for family to come and watch a test match in your city, in your state. Only then you'll be able to make test matches marketable and viewable. I have seen test matches in England, for example. It is an experience getting into the stadium. There's an event happening around the stadium. There's a lot of activity around the stadium. That needs to start happening. Make it accessible for people to enter the stadium and don't make it difficult for them to enter the stadium. Rehan, I find it difficult that West Indies will make a comeback in this test match, third test match. I think that the momentum is now with England and they will keep growing stronger from here. Nilesh Poddawar, yes. Let's not compare Cheteshwar Pujara with Rahul Dravid. He has his own class, own temperament. I think that he will do well in the coming years. He just needs to be given a security, just like he was given in Australia and he did well. देवराज हंस संजू सैमसन का वक्त आई थिंक T20 क्रिकेट में आएगा you might see him and playing you might see a lot of wicketkeeper batsmen playing for India. I want to see Dinesh Karthik playing T20 cricket for India. I want to see KL Rahul and Pant and we might even have to play Ishan Kishan once or twice to see how he is. So you'll see a lot of wicketkeeper batsmen coming up in the next few years. I agree with you, Mehul. I think that Ravi Shastri, I think my choice for the head coach was Mike Hassan, always. I think Ravi Shastri has spent 6 years with the team in different roles. I think time has come for a fresh voice to be heard in the dressing room. You're right, Sagar. Too many chop and change. That's why there was confusion. The last World Cup, we should be competing on par with England. But for 6 years, we had confusion around the playing 11, and we have not allowed the middle order to settle. And that's the reason we have had so many changes and so much confusion in the team. Rishabh Mishra, that's your view that Stark is overrated. Uh, let's see. I think that this year, after the break, when he comes back, let's see how he performs. Let's hope he proves you wrong. Let's hope he proves me right, or let's hope he proves me wrong and proves you right. Let's see what happens when he comes back. I would play Kuldeep, Bipul in Australia.
just to surprise the Aussies. Akurati Praveen, Baz interview will be live at 11 a.m. tomorrow India time. विजित बसक, रहाणे, पुजारा, अश्विन को कितने साल दिए जाना चाहिए? फ्यूचर में आपकी नज़र में कौन प्लेयर है जो उनका जगह चांस मिलेगा? इमीडिएटली तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे आप देखेंगे कि रहाणे परफॉर्म नहीं करें तो उनके जगह पे आप कोई और बल्लेबाज को देखेंगे, और अश्विन को आई थिंक इंडिया में खेलने देंगे बिकॉज उसके इमीडिएटली बाद इंडिया का एक सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, और पुजारा भी खेलेंगे उसमें। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्लेयर्स, शुभमन गिल है, अभिमन्यु ईश्वरन है, प्रियंक पंचाल है, और कुलदीप यादव है जो अश्विन का जगह ले सकते हैं फ्यूचर में। I am not blaming Suraj T20 cricket or IPL. I am blaming the lack of facilities at Indian grounds. That is the problem. I know that it's a pain trying to get into the stadium in India. There are not enough toilets. There are not enough activities for kids to be involved. The stadiums are outside the center of the city. जो मेन सेंटर्स हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, मद्रास, यहाँ पे सब स्टेडियम सेंटर ऑफ द सिटी में है। बाकी सब जगह आप देखेंगे कि जो नया स्टेडियम है वो शहर के बाहर है, तो अगर जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। यस राजा क्यूटिलिशियस, बढ़िया नाम है आपका। मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज, मैं इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज भी डिस्कस करूंगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी डिस्कस करूंगा, और आगे ज़रूर बात करूंगा इसके बारे में। मनी सीनू, व्हाट यू रेट हायर, स्किल टेक्निक वर्सेस एटीट्यूड एंड माइंडसेट? आई रेट एटीट्यूड एंड माइंडसेट मोर देन स्किल एंड टेक्निक। आपके पास अगर टेक्निक हो और माइंडसेट और एटीट्यूड ना हो और आप बैटिंग ना करें पूरा दिन तो कोई फ़ायदा नहीं है। Sagar Malik, I think that he's very underrated. Jason Holder is very underrated in my view. I think that you're absolutely right about that. Shahid Ahmed, it's going to be difficult for Jafra Archer in the final test match. किसको ड्रॉप करोगे आप भाई? Unless Ben Stokes is not recovering. Akurati Praveen, why is Mike Hassan? I feel there are very good coaches in India like Dravid and many others. You know, Akurati Praveen, Mike Hassan is a very methodical coach. He plans well. I like the fact that he took a New Zealand team with very limited resources and took them to the top. And today the team is performing well because of the efforts put in by Mike Hassan and Brendan McCullum and Mike Hassan and Kane Williamson. That's why I rate him very high as a coach. Imagine the kind of things that he could do with a team like India with such a big pool of talent. It would be tremendous. अभिजीत बसक, ध्रुव जुरैल राजस्थान में जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर है खेल रहा है वो अच्छी चॉइस है, हो सकता है। आप क्या सोच जय एंड के बारे में, क्या आपने इनको देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है, उनके बारे में सुना ज़रूर है अभिजीत बसक, बट आई थिंक दैट वी शुड गिव दिस प्लेयर्स अ बिट मोर चांस इन डोमेस्टिक क्रिकेट बिफोर वी टेक अ कॉल ऑन प्लेइंग देम इन इंटरनेशनल लेवल। टेक्निकल हिंदुस्तान, कंपैरिजन बिटवीन हार्दिक एंड स्टोक्स। यार हार्दिक तो काफ़ी वक्त तक खेला ही नहीं है। Stokes is that's why much ahead of Hardik right now. Mani Sinu, Shreyas Iyer in test could get his chance, but Shubman Gill is first in queue right now. At World Cup 2023, VK and RS form will not be as good. Missed a golden chance of winning. Yes, I think I agree with you, Mehul Raj. India missed a golden chance. That's why I'm saying that we need to invest in the younger players and give them consistent chances till the 2023 World Cup. Separate the three teams and ensure that they play consistently in those formats. Australia is the better team right now all over the world, Sagar Malik. They are the more all-round team right now. Vipul Dahal, I think they've got their team selection wrong, RCB. I wouldn't blame Kohli for that. I think that they've consistently got their team selection wrong, and that's why they've not been able to win IPL. Suraj, good night. See you tomorrow. I agree with that, Money. Just Virat said the right thing. Have 5 permanent test centers. Ensure that cricket is played there. Have अपॉइंटमेंट व्यूइंग फॉर टेस्ट मैचेस, जस्ट लाइक बॉक्सिंग डे, जस्ट लाइक आपको पता है लॉर्ड्स में 2 टेस्ट मैच होगा, जस्ट लाइक आपको पता है न्यू ईयर टेस्ट मैच सिडनी में होगा, जस्ट लाइक आपको पता है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच
जोहानिसबर्ग में होगा, न्यूयॉर्क टेस्ट मैच केप टाउन में होगा, उस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। उज्ज्वल पांडे, he's been injured more than he's played for India. Hardik Pandya, that's why his performance is not as good. Sagar Malik, evidence is there. India has not won a tournament since 2013 at the ICC. So I wouldn't call it choking. I would just say that they're not able to turn up on the big matches. क्वेश्चन स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे? मुझे तो दिख रहे हैं भाई। मुझे तो चैट में दिख रहे हैं क्वेश्चंस, आपको दिख रहा है? George Bailey, where are you? Where have you been? Long time. George Bailey, as of now, IPL will happen without crowd unless the UAE government asks and allows the crowd to come in. Split captaincy has worked well when you have had one person not playing a format. So, like when Dhoni and Kumble were split captains, at that time it worked well because Kumble was not playing in the shorter formats. When Dhoni and Kohli were split captains, it worked well because at that time Dhoni was not playing the shorter formats. So, I think that split captaincy works well in those cases. I don't know in this case what will happen. It's difficult to say right now. Shahid Ahmed, it's a good sign that they are having such big players in the support staff. I think that Misbah-ul-Haq is a very good choice as a head coach. I'm not so sure whether he should be the chief selector as well. विपुल दाल, ये सवाल तो हम सब जानना चाहते हैं। सवाल का जवाब, वाई हार्दिक गेट्स ऑलवेज गेट्स फिट बिफोर आईपीएल? आप बताइए, आपको पता होगा तो मुझे भी बताइए। I think the fact that the franchise looks after the players' money, that's why you see the players being more relaxed in the IPL, and that's why they're able to perform at their best under MSD and CSK. I don't see any other reason. अभिजीत बसक, आई वुडेंट से कि आज के प्लेयर ज़्यादा करते हैं। एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर को बैटिंग ओपन करना था वनडे क्रिकेट में, तो वो अपना चॉइस एकदम क्लियरली बता देते थे। गावस्कर कभी कहते थे मुझे ओपन नहीं करना, मुझे नंबर 4 पे बल्लेबाजी करना है। तो ये पहले भी होता था, प्लेयर कुछ ओपन करना चाहते थे, कुछ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना चाहते थे, तो वो पहले भी होता था। ये चॉइसेस तो पहले भी था। सागर मलिक, it's because of money and also because they want to stretch their international career. You're absolutely right. Why Amir and Riaz don't want to play Test match cricket. Also because I think that they are not sure about their bodies. बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, so they want to preserve their body for the shorter formats. Because वहाँ पे भी PSL आ चुका है, तो they want to preserve themselves for that. Ujjwal Pandey, you're right. It's a worry that we are not able to win consistently without contributions from Rohit and Kohli in the shorter format. Rohit has not performed consistently in the Test match format as well. Raja, Cutilicious, Pakistan winning chances in the Test series. I think it will be a close series, but I see that England might just edge out Pakistan, in my view. George Bailey, I prefer a 14-team World Cup, but you and I don't decide. Ultimately, it's Star and the sponsors who decide, and they prefer a 10-team World Cup. They feel that the smaller teams don't make for great viewing, so and they feel that it's a waste of money. That's why we have only 10 teams, unfortunately. मेहुल राज, टॉम मोडी का एक वक्त था, उन्होंने मिस कर दिया था। 2005 में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था इंडिया का कोच बनने का, बट वो वक्त उन्होंने मिस कर दिया था। उसके बाद आई थिंक दैट वंस यू हैव बीन अ कोच इन वन सर्कल, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। डैव वॉटमर को देख लीजिए, नाउ इज नॉट गोइंग टू गेट एन इंटरनेशनल टीम अगेन। दैट्स व्हाई इज नाउ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट बड़ौदा। I think Rishabh, you will see Sri Lanka performing well again. They're finally, I think, settling down. They're getting some good players. It takes time. It's a cycle. So you'll see Sri Lanka performing very well. I agree with you, Tejas Vinod Bhai. I think right now we've got very good pace bowlers in almost all the teams. I think that they need to be given the due credit.
People there, it remains to be seen if Rohit can perform in similar countries, especially in test matches. Uh, Till he doesn't perform, then it will be difficult to say. Uh, Rohit is going to be difficult to see how he performs in swinging conditions. Uh, Manisino, I think that it is a very difficult call in my view to see Rohit performing especially while opening the batting. I think it's going to be a tough call. We could have seen him in New Zealand, but he was not fit, so we didn't see him there. नहीं रेहान तब तक चैंपियंस ट्रॉफी में मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो इट इज़ नॉट राइट टू से दैट अगर हार्दिक रन आउट नहीं होता तो चैंपियंस ट्रॉफी में जान आ जाता, बिल्कुल नहीं. Satyakam Mohapatra, how should the appointment of coaches ideally happen? Like BCCI got the process right. I think that the process is okay. Ultimately, the choice of the captain prevails. The choice of the captain right now is Ravi Shastri. Once they start losing like consistently, then the choice is taken away from the captains, and then the board sets up a process. The board process takes over. Akurati Praveen, yes, CSK looks like having a good chance of winning this year's IPL because of spinners in UAE. Your good observation about RCB also doing well with their batting lineup. Let's see, Ujjwal. Let's hope you're wrong about Rohit Sharma. Let's hope you're wrong, Ujjwal. Let's hope he is able to prove you wrong. Raja Cutilicious, everybody wants to see India-Pakistan series, but I don't see it happening till the politics improves between the two sides. तब तक इंतजार करना पड़ेगा. जॉर्ज बेली 91-92 ऑस्ट्रेलिया टूर में 5 टेस्ट मैच था और एक वर्ल्ड सीरीज कप था. गांगुली के बारे में खबरें तब उड़ी थी, बट ये कोई पक्की बात नहीं है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये तब रूमर्स थे और इट वाज ऑलवेज नॉट प्रूवन. Sagar Malik, I don't pay attention to Shahid Afridi's statements. He makes statements to get attention. If you don't pay attention, he'll go out of headlines. So do not pay any attention to Shahid Afridi's statements. Pant, Mehul Raj, I think the problem has been that he's been with the team, but he's not been playing consistently. And he's always looking under pressure whenever he's playing for India. They need to say that you need the next 5 test matches, the next 10 T20 matches, next 21 days you are going to be playing for India. Give him the long rope, and then if he doesn't perform, drop him. UV Dhoni or Virat AB, your choice. Tough choice, Rishabh Mishra. I would pick Virat AB. In my view, they'll be much more fun to watch. Manisino, no, there has been no review meeting on the New Zealand tour because immediately after that we went into quarantine. Thanks a lot, Devraj. Why don't we select raw talent? It's too early to select Shahid Ahmed, raw talent like that. They need to perform at least one season in domestic cricket before they can be picked. Naseem Shah ko pick kiya, but that's a different criteria altogether. So I wouldn't pick Ravi Bishnoi so soon. Sagar Malik, ICC chairman. See, ICC chairman's role is an independent role, Sagar Malik. It's not an Indian role. So that's why it's wrong to blame Shashank Manohar. Saurav Ganguly, if he becomes, will not be an Indian chairman. He'll be ICC's independent chairman. Vipul Dahal, in the short term, I see Pant continuing in the shorter format. But I don't see him playing that consistently. Who knows, George Bailey, what would have happened, because immediately after that, 92 Australia tour was the World Cup, which was disastrous for India. After that, we had a tour of Zimbabwe and South Africa, which was disastrous for India. And then we had home series where we did well, but I don't know where we would have fit him in the playing 11. So it is difficult to say what would have happened. He could have been dropped right at the end of the South Africa tour in 92 and never played again for India.
Final date schedule, Mehul Raj, September 26th to November 7th. On that note, Mehul Raj, thanks a lot. Thanks a lot, Rutvik Funny, for the contribution of 20 rupees via super chat. आप लोग सब सुपर चैट के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल के लिए। इस चैनल की कंट्रीब्यूशन में आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब अपने एबिलिटी और सामर्थ्य के हिसाब से चैनल को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कीजिए, बहुत बहुत बढ़िया होगा। मैं कल सुबह 11 बजे ब्रेंडन मैकलम का इंटरव्यू लाइव करूँगा एंड आप लोग सब देखिए। I think right now it's difficult to pick, but I think that Pakistan, because of the presence of Yasir Shah, has got a better bowling lineup when it comes to England-Pakistan. On that note, Shahid Ahmed, Rutvik, Funny, and the others, Devraj, Mehul Raj, George Bailey, thanks a lot. Let's meet again on Thursday before the preview for the test match and take this conversation forward. आप लोग सब सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुपर चैट के ज़रिए आप लोग सब इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।